ऐसे लिखना रहेगा। हाँ 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 हॉरिजॉन्टल। अच्छा ऐसे लिख, ऐसे लिखना। हाँ ठीक है, स्टार्ट कर। Okay, students. Okay, students. Today we will continue with the topic that we have started. Yes, I'm starting the lecture. So today we will uh, move ahead with what we're doing in the last lecture. So we have started practicing the problems of solution and colligative properties chapter. So in that we are done with Raoult's law, Henry law, Raoult's law, and relative lowering vapor pressure. So now we have to cover three more colligative properties. So next colligative property that we are going to cover is known as 1 minute. The next colligative property that we are going to cover is known as elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Delta TB. Elevation boiling point delta TB. Okay. So इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं अभी. Number one question. Question number one. The molar elevation constant. The molar elevation constant of water is 0.52 degree Celsius kg mole inverse. Then calculate then calculate calculate the boiling point. Then calculate the boiling point of 1 molar aqueous solution 1 molar aqueous solution of urea. Then calculate the boiling point of 1 molar aqueous solution of urea. This is the question. So whenever we are solving question, we have to first write the data given in the question. Given data. What is data given the question? So what data is given? So you can read. See, you have to read the question again and again if you are not understanding. This is the way you can understand the question more better way. So आपको क्वेश्चन को फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो. The molar elevation constant of water is 0.52 degree Celsius kg mole inverse.
मतलब केबी की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, हमें मालूम है केबी को हम क्या बोलते हैं, मोलर रिलेशन कांस्टेंट बोलते हैं। कितनी वैल्यू दे के रखी है, 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट है केबी का। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे मोलालिटी भी देख के रखी है सोल्यूशन की। मोलालिटी कितनी दी है सोल्यूशन की, मोलालिटी इज इक्वल टू 0.1, नो, इट इज गिवन 1। कितना दिया है मोलालिटी, 1 मोलाल, 1 मोलाल देख के रखा है, ठीक है। अभी गिवन डेटा हम देख चुके हैं। रिक्वायर्ड डेटा क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा, सो द रिक्वायर्ड डेटा इज कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हमें टीबी निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट टीबी, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टीबी यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हमें मालूम है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड केबीएन मोलालिटी। रिलेशनशिप इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी into molality m, to kb into m. So what is delta tb? Delta tb is nothing but tb minus tb naught, tb minus tb naught is equal to kb. What is kb given, 0.52, and molality is given 1, so it is equal to 0.52. We are getting tbc. What is difference between tb and tb naught? tb naught is tb naught is, it is known that tb naught is a boiling point of pure liquid. We uh, all know that the boiling point of pure liquid is 100 डिग्री सेल्सियस। हमें सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट, जो प्योर लिक्विड प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टीबी नॉट हमें मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस। तो टीबी देयरफॉर टीबी, that is boiling point of solution minus boiling point of tb naught is boiling point of pure water, is equal to 0.52. So therefore so therefore tb, boiling point of solution, is equal to 100 plus 0.52. So therefore boiling point of solution is equal to 100.52 degrees celsius. This is the answer we got. So boiling point of solution is equal to 0.100.0.52 degrees celsius. This is the answer. Everyone note down the solution. Put it down. Note down the solution, please. हो गया नोट डाउन करके? डन? हो गया नोट डाउन करके? डन? इज इट डन स्टूडेंट्स? इज इट डन? If it is done, then we'll move to next question.
ओके, हो गया नोट डाउन करके? मिनट। पेजेस बढ़ाना, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। और हो चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया बच्चों नोट डाउन करके? चलो फिर पढ़ते आगे। पता नहीं यार, इसमें ये है पेजेस ऐड करने का ऑप्शन किधर चला गया अभी? पेजेस में ऐड करने इसमें। पेजेस ऐड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में करेंगे वो काम। चलो क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू। The rise in the boiling point of solution. The rise in the boiling point of solution. The rise in the boiling point of a solution containing 1.8 grams of glucose in 100 grams of a solvent is 0.1 degree Celsius. The rise in the boiling point of solution containing 1.8 grams of glucose in 100 grams of solvent is 0.1 degree Celsius. Then, then calculate, calculate the value of the value of molar elevation constant, molar elevation constant of the liquid, of the liquid. Then calculate the value of molar elevation constant of the liquid. Okay, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट। कितने गए? तो इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पेजेस ऐड करते हैं इसमें। फॉरवर्ड पेजेस।
एक मिनट। एक मिनट बच्चों, ये पेजेस मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, तब तक रुको जरा। एक मिनट। ओके, नहीं नोट्स में आया हुआ इसमें ही कर रहा हूँ ना मैं। इसमें पेजेस का ऑप्शन हमेशा आता है, पेजेस ऐड करने का। अभी आज ही क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐड नोट्स कहाँ पे? इसमें भी नहीं आ रहा है देखो। ये नया मैंने ओपन किया, इसमें भी नहीं आ रहा है। देखो, ऊपर ऑप्शन आता है, क्यों नहीं आ रहा है मालूम नहीं मुझे। चलो छोड़ो, अभी इसमें क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे अभी नया नोट्स बनाना पड़ेगा, हर एक में वैसे करना पड़ेगा। चलो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा, व्हाट इज डेटा गिवन इन द क्वेश्चन? Given data. So the data given in the question is the rise in the boiling point of solution containing 1.8 grams of glucose. Means mass of solute is given. Mass of solute. How much? 1.8 grams. Okay. In 100 grams of solvent. So mass of solid is also given. That is 100 grams. So which is equal to 0.1 kilogram. So is equal to 0.1 kilogram. Okay. Also, rise in the boiling point of solution containing 1.8 grams of glucose in 100 grams of solvent is 0.1 degree Celsius. Means the delta TB is also given. Delta TB rise in the boiling point, that is elevation rise in the boiling point, that is elevation in boiling point is given, which is equal to 0.1 degree Celsius. This is delta TB is given. Okay. Also, one more thing indirectly given, that is molecular mass of solute, because we know what is the solute, what is solute here. Molecular mass of solute, molecular mass of solute is equal to, the solute given is glucose. We know the formula of glucose, C6H12O6. So it is 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16 is equal to 72 plus 12 plus 96. So is equal to, it is coming out to be
72 plus 12, 84 plus 96. It is 180 grams. So it's equal to 180 grams. So molecular mass of the solute is 180 grams. So what this is data given the question. What we need to find? We need to find the value of molar elevation constant, Kb. So required data is what we need to find. Required data is molar elevation constant, which is nothing but Kb. We need to find Kb here. Okay. चलो इसको सॉल्व करते हैं. Solution. We know the relationship. Elevation boiling point delta Tb is equal to Kb times molality, Kb into m. Delta Tb is given 0.1 is equal to Kb is given in the question. No, Kb is we need to find out. Kb into molality. Molality. ठीक है. अभी molality कैसे निकलेंगे? What is molality? Molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. In kilogram. So सबसे पहले number of moles of solute. Number of moles of solute is equal to mass of solute, that is 1.8 divided by molecular mass 180. So it is 1 by 100, that is equal to 0.01. 0.0 we are getting number of moles of solute. Next, mass of solvent. Mass of solvent is equal to, we got 0.1 kg. So molality is equal to number of moles of solute 0.01 divided by 0.1. So we are getting molality is equal to 0.1 molar. Molality is equal to 0.1 molar. So therefore we will put in the formula, it is delta Tp 0.1 is equal to Kb into molality is 0.1. So we'll get Kb is equal to 0.1 divided by 0.1, which is equal to 1. So Kb is equal to 1. You can take any unit, Kelvin, kg. There are 4 units possible for Kb. Kelvin, kg, mole inverse. So therefore Kb is equal to, it can be 1 Kelvin, kg, mole inverse. It can be degree Celsius, kg, mole inverse. Degree Celsius, kg, mole inverse. It can be degree Celsius, molar inverse. It can be Kelvin, molar inverse. So there are 4 units possible: Kelvin, kg, mole inverse, degree Celsius, kg, mole inverse, degree Celsius per molar, molar inverse, and Kelvin molar inverse. These 4 units are possible for Kb. Okay. So note down the solution. Note down the solution. Is it done?
Okay, we will move ahead. Okay, student. I hope you all have noted down it. Okay, so we will move ahead now. Hello, students. Okay, we will go ahead. Next question. If 0.15 grams of a solute dissolve in dissolve in 15 grams of 15 grams of solvent. If 0.15 gram of solute is dissolved in 15 grams of solvent and it is observed that if 0.15 grams of a solute is dissolved in 15 grams of solvent and it is observed that the resulting solution the resulting solution is boiling boiling at a temperature at a temperature higher by 0.216 degrees Celsius than that of than that of pure solvent than that of pure solvent than that of pure solvent then cal than that of pure solvent. The molar elevation constant the molar elevation constant the molar elevation constant for the solvent for the solvent is 2.16 degrees Celsius molar inverse. Then calculate then calculate then calculate then calculate then calculate the molecular mass then calculate the molecular mass of the solute. Then calculate the molecular mass of solute. This is the question. If 0.15 grams of a solute is dissolved in 15 grams of solvent and it is observed that the resulting solution is boiling at a temperature higher by 0.216 degrees Celsius than that of pure solvent, the molar elevation constant for the solvent is 2.16 degrees Celsius per degree Celsius molar inverse. Then calculate the molecular mass of the solute. Then calculate the molecular mass of the solute. Okay. So अभी इसमें देखते हैं क्या डेटा देके रखा है इस क्वेश्चन में. Given data. So what data is given the question? So mass of solute is given. How much mass of solute is given? 0.15 grams. 0.15 grams. Okay. Mass of solvent is given 15 grams is equal to 0.015 kg. Okay. Also
Delta TB is given 0.216 degree Celsius. Okay, we can see the temperature is higher by, means it is elevation boiling point, it is delta TB is given 0.216. Also KB is given the question, KB is equal to 2.16 degree Celsius molar inverse. KB is given the question. So this much is data is given the question. What is need to be find? The required data. The required data. The data need to be find is molecular mass of the solute. Molecular mass of solute. Okay. So we will solve this question. Solution. So let the molecular mass of solute be m grams. Be m grams. Therefore, number of moles of solute is equal to mass of solute is 0.15 divided by m. This is number of moles of solute. Mass of solvent is how much given? Mass of solvent. Mass of solvent is equal to 0.015 kg. So molality कितना आएगा? Molality is equal to number of moles of solute 0.15 divided by m divided by mass of solute in kg 0.015. So it is equal to 0.15 divided by 0.015 divided by m divided by m divided by m. So ये कितना होने वाला है ऊपर ये देख सकते हैं आप 0.15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 मतलब ये ऊपर 10 हो जाएगा 10 बाय m आ जाएगा. सो मोलालिटी इज इक्वल टू 10 बाय m. अभी इसको हमें मालूम है रिलेशनशिप डेल्टा टीबी और केबी में रिलेशनशिप क्या है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी. सो डेल्टा टीबी कितना दे के रखा है डेल्टा टीबी 0.216 दे के रखा है. केबी कितना दे के रखा है 2.16 मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी कितना आया 10 बाय कैपिटल है मोलिकुलर मास. सो देयरफॉर मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2.16 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.216. तो ये आपका 10 टाइम्स हो गया. तो कितना आ रहा है देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स. ये आपका सोल्यूशन हो गया. सो मॉलिक्यूलर मास कितना है 100 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. सो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू प्रोसीड like this. Okay, note it down. Note on the solution. Note it down. हो गया नोट डाउन करके. ठीक है. आई होप आप सबका नोट डाउन करके हो चुका है. हो गया बच्चों नोट डाउन करके.
ठीक है, अभी फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point was 0.52 degrees Celsius when 6 grams. Elevation boiling point was 0.52 degrees Celsius when 6 grams of a compound X was compound X was dissolved in was dissolved in 100 grams of water. Grams of water. Kb for water is Kb for water is 0.52 0.52 degrees Celsius Kg mole inverse. Then calculate then calculate then calculate molecular mass molecular mass of, of the compound X. Then calculate the molecular mass of the compound X. So what is data given in the question? Given data. The data given is elevation boiling point. Straightforward, they have given elevation boiling. That is delta TB is given. How much? 0.52 degrees Celsius. When 6 grams of a compound X was dissolved in, so mass of solute is also given. How much? 6 grams. Okay. Mass of solvent is also given. How much mass of solvent is given? 100 grams, which is nothing but 100 into 10 raised to minus 3 is kg. Means it is 0.1 kg. So you're getting mass of solvent is equal to 0.1 kg. Kb is given. Kb for water. Kb is equal to 0.52 degrees Celsius kg mole inverse. Okay. So this information is given. What is required data? The required data is to find molecular mass of the compound X. That is the molecular mass of solute. Molecular mass of the compound X. Okay. So we will start solving this question. Solution. So let the molecular mass of the solute X be capital M. So molecular mass को हमने capital M consider कर लिया, capital M grams. Okay. So therefore number of moles of solute कितना हो जाएगा? Number of moles solute is equal to mass of solute. Mass of solute कितना दिया? Mass 6 ग्राम. तो 6 divided by molecular mass 6 by m, ये हो जाए number of moles of solute. ठीक है. Mass of solvent कितना है? Mass of solvent कितना है? 0.1 kg. तो मोलालिटी आ गई हमारी. मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो इसमें पुट करते हैं नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के कितने? 6 बाय एम, ये सोल्यूट के मोल्स. केजी में सॉल्वेंट का मास 0.1, तो कितना आ जाएगा? 6 डिवाइड बाय 0.1 एम, मतलब 60 एम, 60 बाय एम.
सो मोलालिटी कितना आ रहा है, देयरफॉर मोलालिटी स्मॉल m मोलालिटी इज इक्वल टू 60/m। तो 60/m हमारा मोलालिटी आ गया है। हमें मालूम है फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इज इक्वल टू केबी टाइम्स मोलालिटी। सो डेल्टा टीबी, so delta TB is how much given, क्वेश्चन में डेल्टा टीबी देख के रखा है 0.52। ठीक है, KB is given 0.52 multiply by molality 60/m, so therefore we can see these two will get cancelled, so we can get easily m is equal to 60 grams. M is equal to 60 grams. So molecular mass of the compound X is equal to 60 grams. Note down the solution. Note down the solution. हो चुका बच्चों, नोट डाउन करके? हो गया नोट डाउन करके? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। अगर तुम लोग का हो गया रहेगा नोट डाउन करके तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे। डन। बच्चों चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the molar enthalpy the molar enthalpy of water the molar enthalpy of water is 9700 calorie per mole. Calorie per mole. The molar enthalpy of water is 9700 calorie per mole, and if boiling point boiling point of water is 100 degrees Celsius, then then calculate calculate the value of ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant of water
इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, चलो। मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर दिखे रखा है क्वेश्चन दे, गिवन डेटा। क्या क्या डेटा क्वेश्चन में दिखे रखा है? मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी मैंने वेपराइजेशन लिखा नहीं, इट इज मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वन मिनट। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर of water. Molar, the molar enthalpy of vaporization of water is 9700 calorie per mole, and the boiling point of water is 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. Then calculate value of ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant of water. So given data क्या क्या डेटा दिख रखा है? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन कितना दिख रखा है? मोलर एंथैल्पी 9700 कैलोरी पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देके रखा है टीबी। टीबी इज हाउ मच गिवन? 100 डिग्री सेल्सियस, which is nothing but 100 plus 273 Kelvin, so which is equal to 373 Kelvin। ठीक है, 373 Kelvin, तो ये देखे रखा है। ठीक है, ओके। और सॉल्वेंट कौन देखे रखा है हमें? कौन है सॉल्वेंट, मतलब किसके लिए निकालना है हमें? लिक्विड, कौन सा लिक्विड है? वाटर। लिक्विड का नाम देके रखा है, किसके लिए भी निकालना है? वाटर। ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा क्या है? रिक्वायर्ड डेटा, रिक्वायर्ड डेटा क्या निकालना है? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, तो आपको मालूम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग बट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये दूसरा नाम है केबी का। केबी का ही दो नाम रहता है इसका, और एक नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी के दो नाम है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दो नाम से पुकारते हैं उसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग बट केबी, तो हमें केबी निकालना है इसमें। तो अभी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। अभी इसमें एक फॉर्मूला होता है केबी का, इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और इट कैन बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो क्या फॉर्मूला होता है केबी का? केबी का फॉर्मूला होता है केबी इज इक्वल टू आर इंटू टीबी, बॉइलिंग पॉइंट का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, यू कैन से liquid solvent, you can divided by 1000 into 1000 into delta H of vaporization. This is the formula of Kb. Kb is equal to R into Tb square multiplied by molecular mass of solvent divided by 1000 into delta H of vaporization. ये फॉर्मूला है आपका Kb का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Kb, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Kb, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Kb। गेटिंग इट? ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आर की वैल्यू हमें क्या लेनी है यहाँ पे? देखो, आर जो हमें डेल्टा एच वेपराइजेशन और कैलोरी में देके रखा है, इसका मतलब है आर भी कैलोरी में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू सबकी पुट करते हैं। देयर फोर के बी इज इक्वल टू, देयर फोर के बी इज इक्वल टू, देयर फोर के बी इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी? टू। आर की वैल्यू पता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना वैल्यू होता है? 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो 2 ले लिया आर की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय टीबी, टीबी केल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं, 373 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स में लेना है, कितना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट? 18 ग्राम्स वाटर का मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय 1000, 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन 9700। ठीक है, सो देयरफॉर अभी क्या जे में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा वैल्यूज
आसान आसान दिए रहते हैं। अभी हम लोग रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन का कोई इतना टेंशन नहीं है। कैलकुलेशन के लिए आपको इजी करने के लिए वो रिक्वायर्ड डेटा जो भी रहेगा ब्रैकेट के अंदर दिया रहता है कि लेट, मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ध्यान नहीं, तो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज भी ऐसे आसान दीजिए, कैंसिल हो जाएगी सब। तो कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं कि फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। के बी इज इक्वल टू आर इंटू टी बी स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो के बी इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको मैं 37.3 कर लेता हूँ, एक को 3.73 कर लेता हूँ। कैसे भी कैलकुलेशन से आप थोड़ा सा आसान कर सकते हो, डिवाइड बाय 9700, और इसको आसान कर सकते हो आप। देयर फोर के बी इज इक्वल टू, इसको भी डिवाइड कर लो, 2 इंटू 3.73 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.18 डिवाइडेड बाय 9.7। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो, कैलकुलेशन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है कैलकुलेशन, 3.73 का होल स्क्वायर, 3.73 होल स्क्वायर, 13 पॉइंट, के बी इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका वैल्यू आ रहा है 13.9, 13.9 मल्टीप्लाई बाय 0.18 फिर 9.7। सो देखते हैं इसका फाइनल वैल्यू, कैलकुलेशन करते हैं पूरा, मल्टीप्लाई बाय 2। सो मल्टीप्लाई बाय 2 इसको करेंगे तो कितना होने वाला है, ये 27.8 होने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 0.18 डिवाइडेड बाय 9.7, 9.7, 9 3 करेंगे तो 27 ठीक है, बट 27.8 ने एक्सीड कर जाएगा उसको। ठीक है, तो 27.8 डिवाइडेड बाय 9.7 करेंगे तो 2 कितना आ रहा है, therefore के बी इज इक्वल टू 2.8676, 2.866 इंटू 0.18। तो वैल्यू आ रही है, therefore के बी की वैल्यू आ रही है, के बी इज इक्वल टू 0.0 के बी इज इक्वल टू 0.516, के बी इज इक्वल टू 0.516 डिग्री सेल्सियस के जी मोल इनवर्स। This is the value of Kb you are getting. Kb is equal to 0.516 डिग्री सेल्सियस kg मोल इनवर्स। ओके, सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। Kb का फॉर्मूला, Kb इज इक्वल टू R इंटू टी बी स्क्वायर, बॉइलिंग पॉइंट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। डन स्टूडेंट्स,
बच्चों हो गया नोट डाउन करके? ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। So the next colligative property that we want to cover is depression in freezing point. Depression in freezing point, which symbol is delta TF. Delta TF. The symbol is delta TF. Depression in freezing point. Delta TF. Depression in freezing point. Delta TF. Depression freezing point. Delta TF. चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट for water is 1.86 degree Celsius molar inverse. Molar depression constant for water is 1.86 degree Celsius molar inverse. Then calculate, then calculate, then calculate the freezing point, then calculate the freezing point, then calculate the freezing point of a 0.05 molar aqueous solution, aqueous solution of aqueous solution of a non-electrolyte, a non-volatile, a non-volatile solute. Then calculate the freezing point of a 0.05 molar aqueous solution of a non-volatile solute. तो हमको मालूम है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब हम कोई वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। सो वही क्वेश्चन में उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर क्या देख रखा है क्वेश्चन में, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। गिवन डेटा क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट नथिंग बट केएफ। केएफ की वैल्यू देके रखी है कितनी, 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स, ये देके रखी है केएफ की वैल्यू। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है हमें, और मोलालिटी भी देके रखी है। मोलालिटी देके रखी क्वेश्चन में, कितनी मोलालिटी है, 0.05 मोलार, ये मोलालिटी देके रखी है। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, क्या निकालना है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड डेटा इज टू फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स टीएफ निकालना है हमें। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। सो हमें मालूम है व्हाट इज द रिलेशनशिप, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में है ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। सिमिलरली यहाँ पे भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इट इज इक्वल टू के एफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू मोलालिटी, ये रिलेशनशिप है यहाँ पे। सो हमें पर यहाँ पे एक अलग मतलब एक वहां पे डेल्टा टीबी जो आपका था, आपको मालूम होगा वहां पे डेल्टा टीबी जो था आपका, वो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी जीरो था। बट यहाँ पे आपको एक चीज समस्या में जो आपका टीएफ होने वाला है, डेल्टा टीएफ, वो आपका टीएफ नॉट माइनस टीएफ होने वाला है। बिकॉज
वहां पे एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का है वो बड़ा रहेगा और जो प्योर का रहेगा कम रहेगा। अभी यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का ज्यादा रहेगा और और लोअर किसका रहेगा, सोल्यूशन का रहेगा। तो फॉर्मूला दोनों के अलग, मतलब ये चीज देखने मिलती है फॉर्मूला में। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखना, डेल्टा टीबी टीबी माइनस टीबी नॉट, बट डेल्टा टीएफ इज टीएफ माइनस टीएफ, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। सो देयरफॉर डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा आपका, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू केएफ। केएफ इज गिवन 1.86 into मोलालिटी इज हाउ मच, 0.05। सो वी नो डेल, आपको टीएफ नॉट पता है वाटर का कितना होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है टीएफ नॉट वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टीएफ नॉट। बॉइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 - टीएफ इज इक्वल टू 1.86, 1.86 इंटू 0.05। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1.86 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 5 30, 0 3, 8 5 40 प्लस 3 43, 3 4, 5 1 5 प्लस 4 9। सो कितना आ रहा है ये, 9.3 आ रहा है। मतलब इसको हमने तो ये पर 0.05 दिख रहा है, मतलब इसमें फिर जीरो में लगाने पड़ेंगे तो इसमें मतलब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.86 को मल्टीप्लाई करें 0.05 से, तो आपका जो सोल्यूशन आने वाला है इसमें तो 9.3 आ रहा है, ठीक है। पर और आपको डॉट डॉट लगाने आगे आगे बढ़ने वाले, मतलब 0.093 इसका आंसर आने वाला है आपका, ठीक है, 0.093। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.093, 0.093 ये आपका आ रहा है यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस टीएफ इज इक्वल टू 0.093। देयरफॉर टीएफ की वैल्यू कितनी है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, माइनस ऑफ 0.093 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में चला गया, जीरो के नीचे चला गया फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों जीरो के नीचे चला गया, क्योंकि पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, और जीरो के नीचे मतलब नेगेटिव में जाएगा तो डिप्रेशन हो चुका है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो चुका है, अब फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में हो गया सोल्यूशन का। तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको नोट डाउन कर लो। So TF freezing point of the solution, the answer is minus of 0.093 degree Celsius. है आपका 0.093। नोट डाउन कर लो इसको। हो गया नोट डाउन करके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ ए नॉन volatile solute, non volatile solute, when dissolve in, when dissolve in, when dissolve in 50 grams, 50 grams of benzene, 50 grams of benzene, 1 gram of non-volatile solute when dissolved in 50 grams of benzene, it lowers, it lowers the freezing point,
the freezing point of benzene by 0.4 Kelvin by 0.4 Kelvin. Kf for benzene is 5.12 Kelvin kg mole inverse. Kelvin kg mole inverse. Then find the molecular mass of the solute. Then find the molecular mass of the solute. This is the question. Okay, this is the question. Then find the molecular mass of the solute. तो इसको सॉल्व करते हैं. Given data. What is data given the question? So mass of solute. Solute का mass दे के रखा है कितना? 1 gram. Mass of solvent. Mass of solvent कितना? 50 gram. 50 grams. So is equal to 0.05 kg. Okay. It lowers the freezing point of benzene by 0.4 Kelvin. So depression freezing point दे के रखा है. Delta TF is given, which is nothing but 0.4 Kelvin. Delta TF. Kf is also given. Kf is equal to 5.12 Kelvin kg mole inverse. Okay. So what is the required data? What need to find? Required data. We need to find molecular mass of solute. चलो सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्व करते हैं. So let molecular mass of the solute be m grams. Let molecular mass of the solute be m grams. Therefore, number of moles of solute is equal to mass of solute 1 gram divided by molecular mass. Okay, this is number of moles. Therefore, also we know mass of solvent. What is the mass of solvent given? 0.05 kg. So therefore molality कितना आएगा? Molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, in kilogram. So is equal to number of moles of solute 1 by m divided by mass of solvent in kg 0.05. So is equal to 1 divided by 0.05 divided by m is equal to 20 divided by m. इतना है हमारा मोलालिटी आ चुका है. Molality is equal to 20 divided by m. Molality is equal to 20 divided by m. Molality is equal to 20 divided by m. Okay. अब इसको सॉल्व करते हैं. Delta TF is equal to KF into molality. So delta TF is equal to how much given? Delta TF is given 0.4 देकर Kelvin. KF कितना देके रखा है? KF दिया है 5.12 multiply by molality कितना? 20 divided by capital M. So therefore molecular mass capital M is equal to 5.12 multiply by 20 divided by 0.4. So therefore molecular mass is equal to 51.2 divided by 4 multiplied by 20. So this is 1 za 11, 2 za 12, 30. So it is 12.8. So we can add 120 into 2. So therefore it is come out to be, therefore molecular mass is coming out to be 256 grams. This is the answer. Molecular mass of the solute is equal to 256 grams. Note it down. Note down कर लो इसको. Molecular mass of the solute is equal to 256 grams.
Note it down, students. चलो आगे बढ़ते। हो गया ना बच्चों, नोट डाउन करके? ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.44 grams of substance a substance when dissolved in 22 grams of benzene. It lowers the freezing point of benzene by it lowers the freezing point of benzene by 0.5 degrees Celsius. Then then calculate the molecular mass of the substance. Kf for for benzene, Kf for benzene is 5.12 degrees Celsius kg mole inverse. So this is a question given. We need to find the molecular mass of substance. So mass of what is given data? Given data. So mass of solid substance is given. So see, 0.44 grams of substance when dissolved in 22 grams of benzene means this substance is acting as a solute. So mass of solute is given. Mass of solute how much given? 0.44 grams. Okay. Next, mass of solvent is also given. How much? 22 grams. 22 grams. Mass of solvent is given, which is equal to 0.022 kg. Okay. And delta TF is given, which is equal to 0.5. 0.5 you can take any one. See, this is difference in the temperature. So it can be degrees Celsius kg, no difference because it is delta T, delta TF. So it is temperature difference. वो आप केल्विन में ले लो, डिग्री सेल्सियस में उतने आने वाले, ठीक है। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। केएफ भी देखे रखा है, केएफ देखे रखा है कितना? 5.12 डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, ये देखे रखा है। रिक्वायर्ड डेटा, क्या डेटा निकालना है हमें? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। वी नीड टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, चलो सोल्यूशन। ठीक है, लेट molecular mass of the
substance B m grams. Therefore, number of moles of solute is equal to mass of solute 0.44 divided by capital M. Therefore, mass of solvent is also given, which is equal to 0.022 kg. So therefore, molality is equal to molality small m is equal to number of moles of solute 0.44 divided by m divided by mass of solute in kg 0.022. So therefore molality small m is equal to 0.44 divided by 0.022 m. So which is nothing but we will get this 20 divided by m. You can see it is 2 times and it is 10 times and 2 times also. 10 times करोगे तो कितना हो जाएगा इसका 0.22 और 2 टाइम और फिर 0 ये 0.44 इसका 2 टाइम्स मतलब 20 टाइम्स से okay 0.44 divided by 0.022 is like 20. Okay, so the division is 20 between them, so you can take simplify it also. You see here इसको अपने 44 बना दिया ऊपर, नीचे इसको कितना बना सकते 2.2 बना सकते, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया। सो 2.2 को ये क्या डिवीजन आने वाला है 20 आने वाला है ना, कितना आएगा 20 बाय एम, आपका 20 बाय एम आ चुका है। ठीक है, तो मोलरिटी 20 बाय एम आ गया। अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी एम। डेल्टा टी एफ इज गिवन 0.5, के एफ इज 5.12 multiply by 20 divided by m. So therefore m is equal to 5.12 multiply by 20 divided by 0.5. So therefore molecular mass is equal to 5.12 multiply by इसको करते 20, इसको 200 बना देते, नीचे इसको बना देते 5, तो ये आपको मालूम है कितना है 40। सो ऊपर कितना होने वाला है m इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 51.2 इंटू 4, तो कितना होने 8 और 51 4 का कितना आने वाला है 52204 टू 204.88 ग्राम्स, इतना आपका आ रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, note it down. This is a solution for this question. Note it down. तो बच्चों हो चुका है नोट डाउन करके? डन स्टूडेंट्स? डन? ओके ओके, चलो नेक्स्ट करते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
what should be what should be the freezing point what should be the freezing point of aqueous solution? What should be the freezing point of aqueous solution containing containing 17 grams of C2H5OH in 1000 grams of water? Kf of water is 1.86 degree Celsius kg mole inverse. So question is, what should be the freezing point of aqueous solution containing 17 grams of C2H5OH ethanol in 1000 grams of water? So what is given data here? So the given data is mass of solute. How much mass of solute is given? 17 grams. 17 grams of solute is given. Okay. Next, the also we know the molecular mass of solute. We know the molecular within the solute. What is solute? C2H5OH. So we can calculate its molecular mass 2 into 12 plus 6 into 1 plus 1 into 16. So it is 24 plus 6 plus 16. So it is 46 grams. So we are getting 46 grams mass of solute. Mass of solute is equal to 46 grams. We are getting molecular mass. Molecular mass of solute is equal to 46 grams. Okay. Also, mass of solvent is given. Mass of solvent is equal to how much? 1000 grams, which is nothing but 1 kilogram, 1 kg. Okay, 1 kilogram. Kf is given. Kf is equal to 1.86 degree Celsius kg mole inverse. Okay, this is given. Okay, this is given. Next, what need to find? Required data. What need to find here? Required data is you need to find freezing point. Freezing point. So you need to find freezing point, mean you need to find TF. Okay, so we'll solve it. Solution. So we know that delta TF is equal to KF times molality. Okay, KF times molality. And what is delta TF? Delta TF is nothing but TF naught, TF0 minus TF is equal to KF into M. So TF0 we know for water. TF0 is 0 degree Celsius. And the freezing point of pure water is 0 degree Celsius. So 0 minus TF is equal to KF. KF into M. KF into M. So what is KF given here? 1.86. 1.86 into molality. So just we need to calculate the molality. So we can say therefore delta T. So TF is equal to minus of 1.86 M. This is. So we need to calculate molality. So that is number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. In kilogram. So number of moles of solute. Number of moles of solute is equal to mass of solute. How much? 17 grams is given. Divided by 46. So 17 by 46. Let's see. We'll keep it. देखो कैलकुलेशन ना लास्ट में अगर सिंप्लीफाई हो ना हो अगर हो सकता है तो ऐसे ही रख दो, फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, लास्ट में फिर से कैलकुलेशन, एक ही जगह सारा कैलकुलेशन करने का, तो 17 बाई 40 ऐसे रख दिया इसको। और हमें मालूम है मास ऑफ सॉल्वेंट तो बहुत आसान है, वो तो कितना 1000 ग्राम मतलब 1 kg है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो मोलालिटी होगा, तो मोलालिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 17 बाई 46 और सॉल्वेंट का मास 1, तो ये 70 बाई 46 आने वाला मोलालिटी। सो देयरफॉर टीएफ कितना आ रहा है? टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल माइनस ऑफ 1.86
मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 46। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं इसको 186 लेता हूँ, 186 डिवाइडेड बाय 46 करते, देखो डिवाइड बाय 46, तो आपको मालूम है अप्रोक्सीमेटली अगर वो 46 को आप 4 टाइम्स करोगे तो कितना आ रहा है? 6 4 जा 24, 4 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 62, 1 कितना आ रहा है? 4 4 24 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18 आ रहा है, ये 184 आ रहा है। देखो 184 और 186 में ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये इसको आप अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ले सकते हो। 4 टाइम्स मतलब ये इसको अगर 186 लो तो 186 4 टाइम्स से मतलब ये कितना हो जाएगा? 1.86 माइनस ऑफ 0.04 हो जाएगा इंटू 17। तो इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे, देयर फोर टी एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो 0.68 हो जाएगा, 0.68 माइनस ऑफ 0.68 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया? माइनस ऑफ 0.68 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नोट डाउन द सॉल्यूशन। नोट डाउन द सॉल्यूशन प्लीज। पुट इट डाउन। हो गया बच्चों? डन। डन बॉयज। हो गया बच्चों? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। Calculate the molar depression constant of a solvent which has which has freezing point which has freezing point. Calculate the molar depression constant of a solvent which has freezing point 16.6 degrees Celsius and latent heat latent heat of fusion equals to 180.75 180.75 joule 180.75 joule per gram. Joule per gram. So again, we have seen one question of this type in molar elevation constant, that is in elevation boiling point concept. And again, where we can see the similar concept, a similar type of question in depression freezing point. So there are some formulas of Kf and Kb that you need to be remember. Okay, so let's see what is given data here. Given data. Given data is the calculate molar depression constant of a solvent which has freezing point. So freezing point is given for the solvent. It is 16.6 degrees Celsius, which is nothing but 16.6 plus 273. So it is equal to 289.6 Kelvin. So freezing point is given 289.6 Kelvin. Freezing point is given, TF is given 289.6 Kelvin. Okay.
Next, latent heat of fusion, L of fusion. Latent heat of fusion is given. How much it is given? 180.75 joule per gram. Joule per gram it is given. Let's solve this. Given data is this. Required. What is required data? What is required data? We need to find molar depression constant. Molar depression constant. That is nothing but Kb need to find. Sorry, Kf, not Kb. Molar depression constant. It is not molar elevation constant. Molar elevation constant is Kb and molar depression constant is Kf. Okay, solution. So the formula Kf, Kf is equal to Kf का क्या फॉर्मूला है? देखो दोनों के टर्म्स में फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं. Kf का फॉर्मूला है R इंटू टी एफ स्क्वायर इंटू एम divided by 1000 into delta H of fusion is equal to R into TF square divided by 1000 into latent heat of fusion into L of fusion. ये दो फॉर्मूला हमेशा याद रखो. मतलब आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया रहेगा, मोलर एंथैल्पी फ्यूजन दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया तो ये फॉर्मूला. तो ये आप देख सकते हो क्या रिलेशनशिप है दोनों में. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. ये रिलेशनशिप है. एल फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. ये रिलेशनशिप है दोनों में. ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो. के एफ और के बी दोनों की भी फॉर्मूला मालूम होना बहुत जरूरी है. के एफ और के बी के जो फॉर्मूलाज है वो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है. इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी होती है. आर की वैल्यू, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, देन टीएफ की वैल्यू, उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. हमें मालूम है यहाँ पे कौन मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट. अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट पुट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आर, अगर लेटेंट हीट फ्यूजन में देखिए तो फॉर्मूला क्या है? आर इंटू टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल ऑफ फ्यूजन. तो इस फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास का टर्म नहीं. मॉलिक्यूलर मास का टर्म किसमें आएगा? डेल्टा एच फ्यूजन. अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देके रखा है, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो आपको मॉलिक्यूलर मास लगेगा वहां. तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सेकेंड वाला फॉर्मूला. के एफ इज इक्वल टू आर इंटू टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल ऑफ फ्यूजन. एल ऑफ फ्यूजन, ये हमें एल ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पे. देखो अप्लाई करते फॉर्मूला. के एफ इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो, जो आपको एल ऑफ फ्यूजन देके रखा है ना, लैटेंट हीट, वो जूल में देके रखा है. तो आर को भी आपको जूल में लेना पड़ेगा. आर का यूनिट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है जूल्स में? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. तो 8.314 ले लिया. टीएफ केल्विन में लेना है. केल्विन में कैलकुलेट भी किया था. टीएफ कितना आया था? 289.6. तो ये 289.6 का होल स्क्वायर टीएफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल ऑफ फ्यूजन. कितना दिख रखा है? 180.75. 180.75. तो ये पुट किया. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो थोड़े से कैलकुलेशन भी इसमें ज्यादा रहता है, पर क्वेश्चन में अगर आएगा इसके ऊपर आपको अगर एग्जाम में जेई में या कहीं, तो कैलकुलेशन इतने मतलब डिफिकल्ट नहीं होंगे, आपको आसान होंगे. तो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ना कुछ हिंट आपको दिया रहेगा. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई जितना कर सकते इतना कर लो. इसको 8.3 ले लिया मैंने. ठीक है, तो 1000 को एडजस्ट करते हैं, नीचे का इसको एडजस्ट करते हैं. तो इसको मैंने 2.89 का होल स्क्वायर बना दिया. ठीक है, 2.86 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना हो जाएगा फिर? 18.07 पे. तो उसको मैं 18 के आसपास ले लेता हूँ. चलो 18.1 ले सकता हूँ. चलो 18.1. तो इस तरह से थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप ऐसे इस तरह से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं जितना पॉसिबल है. कि अगर ऑप्शन पास पास में नहीं है तो पास पास में तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. पर जनरली ऑप्शंस थोड़े से दूर दूर ही रहते हैं. ऐसा कोई मतलब बहुत पास पास पर कोई ऑप्शन अगर बनाएगा क्वेश्चन तो अच्छा नहीं है. फिर वो क्वेश्चन तो क्वेश्चन अच्छा, आपको अच्छे मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप पास पास में ऑप्शन दे देखने नहीं मिलेंगे. और अगर पास पास में मिलेंगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन इतना नहीं होगा डिफिकल्ट. कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है. ठीक है, तो अभी ये हमने रैंडम क्वेश्चन उठा लिया इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व. तो कितना आ रहा है कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ठीक है, तो 8.3 डिवाइडेड बाय
18.1, इसको हम लोग इसकी डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.46 के आसपास आ रहा है। और 2.96 का स्क्वायर ये आ रहा है 8.387। तो ये केफ की वैल्यू आ रही है, केफ की वैल्यू आ रही है 3.86। केफ की वैल्यू आ रही है 3.86 डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। इसके लिए आप केफ का जो है ना, मतलब बहुत सारी, मतलब 4 यूनिट इसके आप यूज कर सकते हैं। देखो, डिग्री सेल्सियस की भी जगह केल्विन भी आ सकता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स ये भी आ सकता है। और ये केजी मोल इनवर्स आपको पता है किसका यूनिट है, तो आप केजी मोल इनवर्स के बदले मोलर इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मोलालिटी से आया हुआ है। ये सिमिलरली आप इसको ऐसे भी डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स भी ले सकते हैं। तो 4 यूनिट इसके पॉसिबल है, डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन मोलर इनवर्स, डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स। तो ये 4 यूनिट्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो केएफ को। ठीक है, केएफ के भी, दोनों को भी। चलो अब इसको रिटर्न कर लो, नोट इट डाउन, स्टूडेंट्स नोट इट डाउन प्लीज। नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया बच्चों, नोट डाउन करके? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। हो गया क्या बच्चों सबका? डन। डन बच्चों। समझ में आया जरूरी है आप? डन बच्चों। ठीक है, तो रुक जाते हैं अभी। नेक्स्ट अभी क्या है, हमें और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी है ऐसे भी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बचा हुआ, वांटा फैक्टर बचा हुआ है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अभी इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, तो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी 9:40 हो ही गया है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन, और ये फॉर्मूला जो है ना के एफ और के बी के फॉर्मूले, ये हमेशा दिमाग में रखने का, मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर एंथैल्पी फ्यूजन इज इक्वल टू आर इंटू टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड 1000 इंटू लैटेंट ऑफ फ्यूजन। तो ये दोनों में रिलेशनशिप है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है। सिमिलरली जो हमने लास्ट टाइम जो वेपराइजेशन का किया था, उसमें भी सेम रिलेशनशिप है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये उसमें भी रिलेशनशिप है। तो केबी का भी फॉर्मूला और एक है। केबी का फॉर्मूला मतलब लास्ट टाइम हमने किस में किया था, डेल्टा एच वेपराइजेशन उसमें दिया था, आज जो क्वेश्चन हमने किया, तो आपको उसमें एल ऑफ वेपराइजेशन भी आ सकता है। तो केबी का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू टीबी स्क्वायर। यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट का आएगा, आर इंटू टीबी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू
डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ये फॉर्मूला अब जब डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन दे के रखा है, ये तो आपको कौन सा यूज करना है? अगर एल ऑफ वेपराइजेशन दिए तो आर इंटू टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल ऑफ वेपराइजेशन, एल ऑफ वेपराइजेशन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू एल ऑफ वेपराइजेशन, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो ये दोनों फॉर्मूले के बी का और के एफ का, दोनों भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, इनको हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है? ठीक है बच्चों, अगर आपने नोट डाउन सारा कर लिया है तो हम लोग भी आज के लिए क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। होप आपको आज जो भी हमने कंसेप्ट कवर किए, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें सारा चीज समझ में आ ही गया होगा। दो हमने मोटे मोटा कंसेप्ट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे, मतलब जितना पॉसिबल उतने क्वेश्चंस तो कर ही लिए आज के लेक्चर में। गेटिंग इट स्टूडेंट्स? हेलो, समझ में आया क्या आज का लेक्चर? मतलब जो भी क्वेश्चंस हमने कराए, गेटिंग इट स्टूडेंट्स? सो कैन वी क्लोज फॉर टुडे स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आर यू देयर? इज इट डन? नोट डाउन किया आज का? क्या बच्चों, रिप्लाई तो करो बच्चों। ओके ओके, सो विल मीट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टाइम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके।